काफी आकर्षक था, लेकिन अब इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग चुके हैं। ऐसा लगता है ये सभी को अपने मोहपाश में बांध रहा है। Today we'll see glimpses of color and culture and creativity. It's a very, very special day. In fact, the past has a way of giving us context, but it is in the present that we can plan a future. A long history of colonial rule is left in India, remnants that are now being left behind to create visibility for a new India. This complete area has always been a symbol where governance in the country rests, and people from all across the country come in droves to see the elegant beauty of this place, while keeping pace with the times, providing better amenities, adding aesthetically to the place, all the while keeping the original flavor and construction and the stone in mind has been a part of this project. आज महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी होगा, और साथ ही साथ अब तक जिसे हम राजपथ के नाम से जानते थे, उसके नए नाम के साथ अनावरण होगा, उद्घाटन होगा, और ये नाम दिया गया है कर्तव्य पथ। और ये विहंगम दृश्य जो ऊंचाई से हम देख रहे हैं, जैसे पक्षी की आंख से देखते हैं, बहुत ही आकर्षक इंडिया गेट और ये संसद भवन हमें यहाँ नजर आ रही है। ये नई संसद भवन बनेगी, उसके सामने कुछ और साथ ही नए भवन बनेंगे, उसमें विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट हम कह सकते हैं क्षेत्र बनेगा और आकर्षक भी। In fact, the redevelopment project of the Central Vista, which is the nation's power corridor, envisages a new triangular parliament building, a common central secretariat, revamping the 3-kilometer Rajpath, which will soon be renamed to Kartavya Path, a new Prime Minister's residence and office, and a new Vice President's enclave. This iconic boulevard is being remade and has existed since the early decades of the 20th century. ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अब नया रंग रूप दिया गया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को, उससे न सिर्फ यहाँ देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी रुझान बढ़ेगा। और ये पूरी उम्मीद है कि अब इसके उद्घाटन के बाद, जब हम देख रहे हैं कि कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा, साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, और कल से लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। Water droplets becoming shining bulbs. This is a very artistic view of the Rashtrapati Bhavan. So the whole area has been designed, ensuring that red sandstone and granite has been used. In fact, what you see right here in the center of your screen is the elegant canopy, stone canopy, which is right across India Gate, across the road. And it is here that 30-foot tall, nearly including the pedestal, black jade granite brought from Telangana, made from a single piece of monolithic absolute black granite, originally weighing over 300 tons, has been positioned. And of course the Union Ministry of Culture had provided a place in Delhi. So this was brought to Delhi, where Arun Yogiraj and his team of dedicated sculptors gave time to carve out the statue, which shall be unveiled in a short while from now. बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि लगभग 30 फीट ऊंचा ये ग्रेनाइट का पत्थर जब तराशने के लिए लाया गया, उसके बाद 28 फीट ऊंची, 6 फुट चौड़ी और 65 मीट्रिक टन वजनी ये प्रतिमा तैयार हुई, जिसका अनावरण कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
the complete venue full over here, and here we can see the arrival of the Prime Minister's carcade. There is a naval band also positioned, which shall play Kadam Kadam Badhai Ja, the INS song. And all eyes now towards the entry gate, from where Prime Minister Shri Narendra Modi will arrive at the venue to first unveil the statue of Netaji Subhash Chandra Bose and then the inauguration of Kartavya Path. और यहाँ ये बताना भी आवश्यक है क्योंकि उसके बाद एक कार्यक्रम होंगे। जैसे ही अनावरण होगा उसके बाद पंचवाद्यम, और आपने भी बताया कि जो आजाद हिंद फौज का गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, उसे नेवी का बैंड उसकी धुन को प्ले करेगा। माननीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहां अधिकारीगण, मंत्रीगण सभी उपस्थित। The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, arriving at the venue, greeted by the Minister of State of Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishore, the Minister of State Culture, Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri, the Minister of Culture, Shri G. Kishan Reddy, and the Minister of State Culture, Srimati Meenakshi Lekhi. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस पाक ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। प्रदर्शनी में उन लोगों के लिए काफी आकर्षण रहेगा जब वे यहां आएंगे जिन्होंने शायद दिल्ली भ्रमण ना किया हो, या वो उस पीढ़ी से हो जिन्होंने पुराने भवनों को बहुत अच्छे से नहीं देखा, लेकिन चित्रों के माध्यम से वो इस पूरे क्षेत्र का कर्तव्य मार्ग का स्थल की ओर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जी,
In fact, the 3-kilometer stretch, which is now Rajpath and is one of the most important roads in India, is more than 100 years old, and the British called it Kingsway. Well, Rajpath is a literal translation, and today it will be officially renamed Kartavya Path as India takes yet another step to shed its colonial past. We will be a part of history as the iconic 3-kilometer stretch will make way for Kartavya Path, the path of duty. The name change was made official yesterday, and today is the inauguration. In fact, on the 12th of December 1911, at the Delhi Darbar, King George V announced the shifting of British India's capital from Calcutta to Delhi, given Delhi's location, and the British thought it would be easier and more convenient to rule India, and then this was called Kingsway. यहाँ इस गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री अवलोकन भी कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का, और वो सब अनुभव कर रहे हैं जो यहाँ आने वाले लोग अनुभव करेंगे। किस तरह का ये पूरा क्षेत्र है और किस तरह इसे पुनर्विकसित किया गया है, इसके सौंदर्यकरण के लिए क्या किया गया है। और कुछ देर पहले जब श्रमजीवियों से प्रधानमंत्री ने बात की, उन्होंने उनसे जरूर ये जाना होगा कि उन्हें कितना यहाँ श्रमदान देना पड़ा। हमने भी कुछ श्रमजीवियों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि दिन रात उन्होंने एक किया इस पूरे इलाके को सुंदर बनाने के लिए, पुनर्विकसित करने के लिए। Straight, clean lines of the new construction, blending with the old architecture, keeping the flavor the same, and of course, clean lines, stone, very easy to maintain. This is a Kartavya Path, being an example of public ownership and empowerment. And here you can see the beautifully glowing Rashtrapati Bhavan, the residence of the President of India. And just below that, the gently sloping Raisina Hill, moving on to Vijay Chowk, and then this stretch called Rajpath. Every year on the 26th of January, color, culture, military discipline, pageantry, pomp all come and walk down this path. And today, it's a special occasion for the venue. और अब कुछ ही देर बाद स्टेज पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, और एक बार फिर हम देख रहे हैं वो कैनोपी जो कई सालों से खाली थी, लेकिन अब यहां भारत माता के सपूत महान नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उसका आज अनावरण किया गया है, उसे यहां स्थापित किया गया है। Elegant in its simplicity, harboring under it the statue of one of the greatest leaders of India, Netaji Subhash Chandra Bose, who gave up a life of comfort, who gave up a bright career to jump headlong into fighting for freedom, passion, resolve, and the great ability to inspire young people. जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वैसे वैसे यहां की खूबसूरती और निखरती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत मां के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने बड़े गर्व के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था कि वे स्वतंत्रता की भीख नहीं लेंगे, बल्कि इसे हासिल करेंगे। नेताजी ने स्वाधीन भारत का भरोसा दिलाया था। और यहां के ये फव्वारे अपनी भव्यता खुद दर्शा रहे हैं। इंडिया गेट पर दमकते हमारे
राष्ट्रीय ध्वज के रंग। So ever since we arrived here earlier this evening, there were a multitude of people wanting to get into the venue, all very excited, probably also looking forward to the time as to be one of the first people to walk on Kartavya Path. The Prime Minister now has arrived at the dais. हर काम देश के नाम